Now there are two more uh, topics of this character development phase left, and they are one is the teamwork, and the other one is the citizenship. Now, about the teamwork, there are many kinds of people who live in a different cultural settings with different character attributes, with different qualities, different abilities. But this teamwork is something which is, if you ask me, it is a prerequisite to the leadership. This is directly related to leadership. Now, teamwork is like all of you know that people play football, people play basketball, and the other games that you people play, the team games. What happens is that whatever is the target, for example, if it is football, the target is to throw the ball into the goal. And in order to reach that, there are certain rules of the game. Like you have to kick the football with your feet or with your head. You cannot use hands for playing football. And if you use your hands, that is considered to be a foul. And there are other restrictions also, restrictions related to the ground, restrictions related to how far a player can go, like we say offside, a player who goes into other team's side before the ball, that is considered to be offside, and many other, like pushing someone, kicking someone, or like not playing fairly. These are all the rules of the games. Beyond these rules and restrictions, there is a method through which the game is played. Now, in that method, 11 people, there are 10 people or 11? 11 people, they move the ball towards the opponent's goal. Both the teams have their objective is to throw the ball into the goal, so they have to move the ball. Both the teams have to try and move the ball towards the goal. Now, for that purpose, what the team players do is that they manage through each other's support. One person gives pass to the other person, that person gives pass to the third person, and that is how the ball keeps moving around in the ground among different people. And ultimately, one of them scores the goal. So it is seldom that a goal is scored by only one man. It is seldom. Like if there are 100 goals in the name of a team, you would see that there would be maybe a few odd penalties that are scored by individuals, maybe some odd free kicks that are scored by individuals, or some extraordinary skill of the game through which an individual is able to dodge all the members of the opponent's team and get the ball into the goal. Now, this is where we never look at it that way. But my job today is to let you see the importance of playing as a team. No work can be done, grand works, all the grand schemes, all the bigger goals and targets in the history of humankind have always been a result of a teamwork. Individuals in the team do matter, but it is actually the teamwork
which helps achieve goals. If any member of the team does not play properly, or he becomes greedy, or he starts to violate the rules, or he starts to do some sort of uh, unguided practice, which is not part of the plan of that work, what happens is that the efficacy, that the outcome of that work is seriously jeopardized. The question remains, what is that one thing, one special thing, which does not let a person become a team member? What is it? The deepest problem that an individual member of the team faces who does not become a good team member. All right, this is pride. So you people know that already. Pride. What is that pride? What pride of what? Okay. I do not need anyone. I know the game. I know how it is done. I am too good at it. I am, the one who is the leader or whatever. The pride, the false pride, I would say, in thinking that he as an individual is something special, something extraordinary. So he considers himself, in hindsight, better than the team members. Or he does not trust in the team members, in other words. So if one of the most destructive abilities to destroy a team is the pride of an individual in the team, the most constructive ability in the team is which one? Trust. You got to have trust in your team members. You got to believe that they are good enough to handle the job at hand. Now, this is something that needs to be learned through practice. People need to learn it through practice. वरना ये theoretically तो मैंने अभी आपको बता दिया है. आप इसको already भी काफ़ी सारा जानते हैं because you play in teams and you know that. You already know कि एक आधा होता है टीम में जो है ना वो खच्चे मार रहा होता है, वो अपनी मर्जी करता है, वो दूसरों को जो है ना वो बॉदर नहीं कर रहा होता कि यार बाकी भी तो लोग खेलने के लिए आए हुए हैं, पास ही दे दूं मैं. वो पास नहीं देगा, वो खुद जा के हर चीज़ को टकरे मारेगा. वो मतलब लोग चीख रहे हैं मुझे दे, इधर फेंक उधर फेंक, उसके ध्यान में ये बात होगी ही नहीं. वो कहेगा मैं ही गुल मोहम्मद हूँ बस. तो इस तरह से टीम्स जो होती हैं उनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड होती है वो है ट्रस्ट इन अदर्स. In fact, the trust level is supposed to be such that you need to trust more than your own self upon your team members. आपको अपने आप से ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है बाज़ औक़ात अपने टीम मेंबर्स पे. और the lessons that you learn during the play or during the process of going towards your goals are ब्यूटीफुल. मतलब बाज़ औक़ात आपने ट्रस्ट किया एक अपने साथी पे और उसको एक काम दे दिया और उसने एंड टाइम पे वो काम नहीं किया. सो व्हाट डू यू लर्न? यू लर्न व्हाट हैपन्स व्हेन द ट्रस्ट इज ब्रोकन. दिस इज अ ग्रेट लेसन. ये बहुत बड़ा सबक होता है. अच्छा, इसमें आप क्या सीखते हैं? अगेन द टेस्ट ऑफ योर प्राइड कम्स इन. सबसे पहले तो आपके अपने प्राइड का टेस्ट आता है कि क्या तुम ये समझ, अगर एक बंदे ने गलती कर दी है, उससे गलती हो गई है, उसने काम ठीक नहीं किया, तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम खुद बहुत बड़े चैंपियन हो? तो सबसे पहले तो अपनी ह्यूमिलिटी का टेस्ट आता है. सो पीपल हु वर्क इन टीम्स, they learn faster, they learn quicker, and because
when an individual is learning, he only has one perception, one frame of mind through which one vision. Like if I am an individual, I have one vision. I can see at one side, like this side, and if somebody is sleeping there, I can't see. But if I have team members sitting amongst you, then I have eyes and ears, both. They are listening to you more closely, they are watching you more closely than I am. So then what is it? I am trusting them. I am trusting my team members. And when one of them fails to perform the act of working towards the goal, my trust is broken. So if my trust is broken, what choices do I have? Yeah, so normally what people do is that they become self-centered. They stop believing in the team. And they say कि मैं सारा कुछ आप ही करना पैंदा है बंदे नू. Have you heard this? A lot of, how many of you have the parents or father who's doing business? Right, a lot of you. So आप लोगों के अब्बा जी अक्सर ये कह नहीं होते हर काम आप ही करना पैंदा है, मुलाजम ते किसे काम दे नहीं होंदे. You've heard that? Why does it happen? Because over and over वो बार बार आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपका ट्रस्ट, they are breaking your trust again and again. So what is the solution to this? Telling them their mistakes, changing of the tasks, changing of the individuals, changing your own methodology, bringing change to the plan of execution. So you see, when the trust is broken in the team, a huge learning starts if one is interested in learning. Most of the people do not remain interested in learning. वो self-centered हो जाते हैं, वो सीखते नहीं हैं. उसमें भी प्राइड होता है ना. They think कि यार इनको एक काम दिया हुआ था, और वो ये नहीं सोचते कि मैंने जो काम दिया हुआ था हो सकता है उसमें कोई गलती हो. मैंने इसको जो काम असाइन किया है, अगर कासिम को मैंने एक काम दिया है तो हो सकता है कासिम इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब बट इज गुड एट समथिंग एल्स. तो इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे बिकम ट्रस्टलेस. वो बिल्कुल यकीन करना छोड़ देते हैं और उसका नतीजा क्या होता है? लर्निंग नहीं होती. आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल. मैं एग्जाम्पल्स इसकी बिजनेस की और इन चीज़ों की दे रहा हूँ बिकॉज यू गॉट टू फेस दीज ऑल थिंग्स इन योर लाइफ. Sooner or later, you all are going to face this. कि एक बंदा है, उसको आपने काम दिया और अगर उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, उससे वो काम सही नहीं हुआ, तो योर इमीडिएट रिस्पॉन्स मोस्टली इज कि जी मैं खुद ही करूंगा, फिर अब ये भी मुझे खुद करना पड़ेगा. Whereas I often give an example. If this was the case, अगर ये बात सही होती, अगर ये मेथड ठीक होता, अगर ये टेक्निक ठीक है, तो फिर मुझे ये बताइए, हाउ इज कोका कोला फंक्शनिंग इन मोर देन 128 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? हाउ डज कोका कोला हैव मोर देन वन फैक्ट्री इन अ कंट्री? मतलब इन पाकिस्तान मेरा ख्याल है कोका कोला की 10-12 फैक्ट्रीज हैं. So 128 countries and every country having at least 10 factories, that makes 1200 and something, like 1200 factories, maybe more than that. 1200 factories, huge factories, and spread across the globe. तो वहां पर उनकी जो टीम्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, all of them are perfect. So how do they work then? उनका मालिक भाग भाग के आता है. वो फर्ज करें अगर उनका मालिक यूएसए में रहता है और पाकिस्तान में एक मुलाजिम गलती करता है, तो उनका मालिक भागा भागा आता है और खुद गलती सही करता है. They have learnt. अब एक बंदे ने सीख लिया ना, अब उसको पता चल गया कि यार ये टीम को मैनेज करने में जो वीक लिंक्स होते हैं, जहां वीकनेसेस होती हैं, जो लोग
अपने आप को इंप्रूव नहीं करते या अपने आप को बिल्ड नहीं करते, वो टीम का वीक एरिया रहते हैं, तो व्हाट डू दे डू देन? दे स्टार्ट टू डेवलप सिस्टम्स। वो क्या करते हैं? दे बिल्ड सिस्टम्स, दे मेक सिस्टम्स जिसमें उनको ट्रस्ट की जरूरत नहीं रह जाती। समझ में आई बात की? व्हाट डज अ सिस्टम डू? सिस्टम क्या होता है? एवरी इंडिविजुअल इज क्लियरली, elaborately told their responsibilities, their duties, their rights of within the team। हर बंदे को उसकी तमाम जिम्मेदारियां जो हैं, उसकी ड्यूटियां और उसके हकूक, वो उसको बता दिए जाते हैं और उनके साथ नताइज भी बयान कर दिए जाते हैं कि अच्छे काम के नताइज ये होंगे, बुरे काम के नताइज ये होंगे। जैसे वो कहा उसने कि वो उनको सैलरीज काट लेते हैं, डराते हैं। इट इज नॉट जस्ट द reprimand, it is reward and reprimand. So what do? Is they develop a system of reward and reprimand कि अगर एक शख्स अपने आप को ग्रो करेगा इन अ टीम तो उसको यह फायदा होगा। इंसेंटिव्स, सो दे इंसेंटिवाइज द जॉब्स, दे गिव इंसेंटिव्स इन द जॉब कि जी आपने अगर ये वाला काम कर लिया तो आपको इतने % बोनस मिलेगा, आपको सैलरी इंक्रीज होगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको ये होगा, घर मिलेगा, प्लॉट मिलेगा, व्हाटएवर, दीज आर इंसेंटिव्स। और अगर आपने ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, इफ यू आर अनेबल टू फुलफिल देम, दिस विल बी द स्टेज। ये स्टेजेस होंगी कि जिसके अंदर पहले आपको एक यूं वार्निंग दी जाएगी, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड ब्लैंक कॉन्ट्रैक्ट, देन वी विल वो क्या होती है, काउंसलिंग विद द एडवाइजर्स, देन एंड देन कॉलिंग द पेरेंट्स, मीटिंग विद द पेरेंट्स, एंड यू नो that is how you build a system. Now in this, when the team building is going on, this is the job of the team leaders, that they weave a system around every task, everything they do, they weave कहते हैं। आप में से कितनों ने अपने किसी घर की किसी बड़ी को जो है वो स्वेटर बुनते हुए देखा है, सिलाइयों से देखा है? You know, they do this like this, और आहिस्ता 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 करते करते पूरा स्वेटर बन जाता है। So this is called weaving. Weaving वो भी होती है जब ये जो कपड़ा बना हुआ है, इस कपड़े के अंदर इस तरह से भी धागे हैं और इस तरह से भी धागे हैं। इसको कहते हैं ताना, इसको कहते हैं बाना। So ताना बाना मिलके कपड़ा बनाते हैं। When weaving, how is the weaving done? When machines में इस तरह से धागे चलते हैं और इस तरह धागे चलते हैं, एंड दे स्टार्ट कमिंग टुगेदर, इस तरह करते करते, एंड दे बिकम अ क्लॉथ, दे टर्न इनटू अ क्लॉथ। सो दिस इज कॉल्ड वीविंग, वीव करना। सो इट इज द जॉब ऑफ ऑल द लीडर्स। ये बेसिक टास्क होती है फॉर ऑल द लीडर्स, मे इट बी अ बिजनेस लीडर, अ रिलीजियस लीडर, अ पॉलिटिकल लीडर, leading some organizations, the managers, the hierarchy, the top of the, it is their job to build and implement the systems and make the frameworks for the teams to thrive, for the team functioning, for the working of the team. समझ में आई बात की? तो इस तरह के सिस्टम में फिर होता ही है, बिकॉज these are man-made systems. I cannot say that they are extremely fair. I cannot say that. The systems are never fair. 100% guaranteed कहीं भी नहीं होता। लेकिन what happens is they provide opportunities to those who are fair in the system. जो लोग अपने आप से सच्चे होते हैं, वो जब ऐसे सिस्टम्स में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे सिस्टम्स में जाते हैं, तो वो थ्राइव करते हैं, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि
उनको अपने सेट पैरामीटर्स पता चल जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट, डूज एंड डोंट्स का पता चल जाता है, रिवॉर्ड एंड रेप्रिमांड की समझ आ जाती है। तो वो ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना जानते हैं, दे थ्राइव इन दोज सिस्टम्स एंड दे क्लाइंब द लेडर्स, और वो आगे बढ़ते जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। कुछ और किस्म के लोग भी, मैंने कहा ये फेयर नहीं होता हमेशा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो सिस्टम को मैनिपुलेट करना सीख लेते हैं, चालाक हो जाते हैं, अय्यार हो जाते हैं। कई ऐसे होते हैं कि जो खुशामद के जरिए अपना रास्ता ऊपर बनाते हैं। खुशामद करना, सर जी सर मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मक्खन ले आया, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ने अपने हथों तो कढ़िया है, यू नो। अब नाउ ही नोज कि उसने फलाना काम खराब किया हुआ है, सर जी ने पकड़ के गर्दन दबानी है, तो इससे पहले कि सर जी पकड़े मैं सर को मक्खन लगा दूं। सो यू सी दैट इज हाउ मैनिपुलेटर्स आर ऑलवेज देयर। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल वर्क इन द टीम्स, बट टीम वर्क कैन नॉट बी डन अलोन। Team leaders have to devise a system of work. If they do not devise a system of work, their teams will never grow. They will never improve. बल्कि वो उसके अंदर हर वक्त कोई ना कोई confusion की कैफियत, कोई ना कोई disturbance मौजूद रहेगी, just because the team leaders fail to develop the systems. So ये जो आप में से कितने लोगों ने ये सुनी है कि भाई जेड़े कारोबार ते आप नजर ना रखिए वो नहीं चल सकता। सुनिए आप लोगों ने बात, ये किन लोगों, ये वो हैं, दीज आर दोज पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड टीम वर्क, नंबर वन। नंबर टू, दे डू नॉट अंडरस्टैंड देयर एक्चुअल पोजीशन। वो अपने आप को टीम लीडर्स नहीं समझते, बल्कि वो अपने आप को मालक समझते हैं। मैं मालक हां, मेरा कारोबार है। वो अपने आप को मालिक समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो उनकी अकल में बात आएगी वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगी। सो दे आर देमसेल्व्स रिडल्ड विद प्राइड। वो खुद तकब्बुर का शिकार होते हैं, इसलिए उनसे ना कारोबार सही होता है, वो शिकायतें करते रहते हैं, एक काम नहीं करते। और वो क्या काम है? सिस्टम नहीं बनाते, वो सिस्टम डेवलप नहीं करते। सिस्टम डेवलपमेंट क्या होती है कि दुनिया में हर काम जिसको आपने बनाना है, खुद से क्रिएट करना है, इट विल गो टू लॉज, प्रिंसिपल्स, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस। विदाउट रेगुलेशंस, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन टीम्स, नथिंग कैन वर्क। कोई काम हो ही नहीं सकता अगर लॉज ना हो। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज, व्हाट इज देयर? chaos. What is chaos? Nothing is clear. In chaos, nothing is clear. So that is how teams are developed. ये एक बात याद रख लेना, तुम में से कुछ लोगों को जिन्होंने ये आज की बातें सीख ली हैं, बल्कि ये सारी बातें जो मैं पिछले अरसे में बता रहा हूँ, लेकिन ये तो ख़ास बात है कि कुछ लोगों, तुम में से कुछ लोगों को इसकी कदर पता चलेगी एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, व्हेन यू विल रियलाइज दैट आधी दुनिया को, बल्कि पौनी दुनिया को इस बात की समझ ही नहीं है कि टीम्स बिल्ड करनी पड़ती हैं। टीम्स, बनी बनाई टीम्स नहीं मिलती हैं कहीं से, और जो बनी बनाई टीम्स लेके आते हैं वो रोते रहते हैं। टीम्स हमेशा बिल्ड करनी पड़ती हैं। यू गॉट टू वर्क इन बिल्डिंग द टीम्स। और एज अ लीडर, अगर फर्ज करें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक एंड बिल्ड द टीम, देन यू हैव टू बी अ थिंकर एंड अ फिलोसोफर ऑल्सो एट सम पॉइंट। आपको थिंकर होना पड़ता है, आपके पास क्लैरिटी ऑफ विजन होगा तो आप हायर लेवल ऑफ लाइफ गुजारेंगे, वरना अवामुन्नास की ज़िंदगी तो ज़्यादातर ने गुजारनी होती है, वो तो गुजार ही रहे हैं, तो उसमें इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो आप कर रहे हैं वो करते रहें, आप अवाम बनेंगे अल्टीमेटली। जिन लोगों को अवाम के लेवल से ऊपर जाना है, उनको थिंकिंग, अपनी जो सोच है उसके ऊपर पैरे लगाने पड़ेंगे, उसको कर्टेल करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न टू थिंक। How many of you know that thinking can be learnt like learning football? Do you know that? Oh God, I had, because मुझे इसीलिए अंदाज़ा था कि अब जैसे, मतलब मैं यहाँ पर जैसे ही कुछ लोगों को सिखाना शुरू करता हूँ वो अपसेट होना शुरू हो जाते हैं। किस लिए? What for? Why do they do that?
Can anyone explain? They are fearful of what? So their fear should put them into running mode or changing mode. That's the choice you make. Some people run away. They are cowards. They run away. And they will keep running away throughout their lives. Every responsibility which will come their way, because everything that you do has to end in two ways. What are those two ways? Success or failure. आप दुनिया में कुछ भी करेंगे, आपको या तो कामयाबी मिलेगी या नाकामी मिलेगी. सो व्हाट दीज पीपल डू इज कि नाकामी ये नहीं है कि कभी मिलनी नहीं है, ऑलवेज फेलियर वुड ऑलवेज बी देयर. तो ये लोग ये करते हैं, जो कावर्ड जिनकी मेंटालिटी हो गई होती है, दे रन अवे फ्रॉम ऑल फेलियर्स. ये भाग जाते हैं. इंस्टेड ऑफ व्हाट डिड आई टीच यू अबाउट फियर्स? हाउ टू ओवरकम योर फियर्स? Face your fears. Face your fears with integrity, with honor, with truth, with bravery, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ.